Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 4th. I am your general science teacher. My name is Sadia Saeed. Now let's start chapter number 1 of your midterm syllabus, Understanding Ourselves part 4. Open your books at page number 11. Hold your pencils in your hands. Underline the words and write down the difficult meanings as well. Disorders of human body. Disorders mean खराबी, इंसानी जिस्म की खराबी. Disorders of teeth, दांतों की खराबी. Tooth decay, दांतों का गलना सड़ना. Tooth decay is the common type of teeth disorder. It occurs when plaque is formed on the surface of teeth. Tooth decay दांतों की खराबी की एक आम किस्म है. ये तब होता है जब हमारे दांतों पर प्लाक यानी पीली तह बनती है. If tooth decay is not treated immediately, it causes severe kind of toothache, infection and loss of teeth too. अगर दांतों का फ़ौरन इलाज ना किया जाए तो इसके नतीजे में दांत का दर्द, मुख्तलिफ अमराज और दांतों का गिरना शामिल है. Regular visits the dentist and brushing habit can prevent tooth decay. बाकायदगी से दांतों के डॉक्टर के पास जाने और दांतों को रोज़ाना ब्रश करने की आदत से हम दांतों को गलने सड़ने से बचा सकते हैं. डिसऑर्डर्स ऑफ स्टमक, मैदे की खराबी. डिस्पेप्सिया, बदहज़मी. इट इज़ नॉन अल्सर स्टमक पेन. सिम्टम्स आर बर्निंग, सेंसेशन, डिस्कम्फर्ट इन अपर एब्डोमेन एक्सेट्रा. इसमें मैदे में दर्द होता है. इसमें पेट में जलन का एहसास और बेचैनी होती है. प्रिवेंशन इज़ टू अवॉइड ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड. हमें चाहिए कि हम ज़्यादा खुराक और मिर्च मसालों वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ना करें. ऑल्सो वी मस्ट अवॉइड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड शुड च्यू फूड प्रॉपरली. और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मसलन कोका कोला, पेप्सी, मरिंडा और ड्यू वगैरह से बचें और ख़ुराक को चबा चबा कर खाएं. फूड पॉइजनिंग. व्हेन द फूड इनटेक एक्सीड्स फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इट रिजल्ट्स इन सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया. जब हम अपनी जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा खुराक खा लें तो इसके नतीजे में हमें उल्टियाँ और दस्त लग जाते हैं. The situation is known as food poisoning. It also leads to ulcer in severe conditions. ये हालत फूड पॉइजनिंग कहलाती है और इसकी वजह से हमें अल्सर जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है. अल्सर मैदे के ज़ख़म को कहते हैं. Come to page number 12. Disorders of skin. Itchy skin, uncomfortable and irritating sensation on skin is called itching. It is also called as pruritus. Disorders of skin, जल्द की खराबी. itchy skin, खारिश वाली जल्द. itchy skin, जल्द की खारिश. इसमें जल्द में खारिश, बेचैनी और परेशान कुन एहसास होता है. इसको प्रूराइटस भी कहते हैं. प्रूराइटस का मतलब है सख्त खारिश वाली बीमारी. Redness, spots, blisters and scaly surface are some common symptoms of this disorder. इसमें आम तौर पर जिल्द पर सुर्खी, धब्बे और छाले नमूदार होते हैं और जिल्द खुरदरी हो जाती है. Usage of moisturizing cream is highly recommended. Try to avoid scratching during itching. हमें चाहिए कि हम मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल करें और जल्द के और ख़ारिश के दौरान जल्द को ना खुरचें. एक्जिमा. It is the skin disease in which the skin becomes inflamed or irritated. It is severe form of blisters. It appears on the face, back of knees, hands or feet. Most commonly it can be cured by proper medication. एक्जिमा ये भी जिल्द की एक बीमारी होती है जिसमें जिल्द में सूजन और परेशान कुन एहसास होता है. इसमें चेहरे, कोहनियों की पिछली तरफ, हाथों और पाँव पर छाले नमूदार होते हैं और इसके लिए हमें सही इलाज की ज़रूरत होती है. वेज टू कीप बॉडी हेल्दी. इन तरीक़ों से हम अपने जिस्म को सेहतमंद रख सकते हैं. ईट हेल्दी फूड्स. ईट हेल्दी फूड्स that
proteins, carbohydrate, fat, vitamins, minerals and fiber. ہمیں چاہیے کہ ہم صحت بخش خوراک کھائیں جس میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، فیٹس، وائٹامنس، معدنیات اور ریشہ شامل ہیں. This will maintain your body's health. Also, to keep body healthy, you need to avoid unhygienic food. اس کی وجہ سے ہماری صحت برقرار اور ٹھیک رہتی ہے. ہمیں اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے غیر صحت مند خوراک سے بچنا چاہیے. Regular exercise. Regular physical activity helps control your weight, strengthen your bones and muscles. باقاعدگی سے ورزش کرنے سے آپ کا وزن نہیں بڑھتا، اس سے آپ کی ہڈیاں اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں. It also improves your mood and overall mental health. Exercise may add extra healthy years to your life. اس کی وجہ سے آپ کا ذہن تازہ دم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کچھ سال اور بڑھ جاتے ہیں. Get enough sleep. Sleep is necessary for the immune system which defends your body against infections and other harmful substances. ہماری قوت مدافعت بڑھانے کے لیے نیند بہت ضروری ہے جو آپ کے جسم کو گندے مادوں اور بیماریوں سے بچاتی ہے. 7 to 8 hours of sleep a day is good for healthy body. ایک صحت مند جسم کے لیے پورے دن میں 7 سے 8 گھنٹوں کی نیند بہت ضروری ہے. Reduce stress. Stress management plays an important role in keeping one's body healthy. ذہنی دباؤ کے کم کرنے کا انتظام کسی بھی جسم کو صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. Stress cannot be avoided. It can be controlled with strategies like exercise, yoga or meditation. ذہنی دباؤ کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اس کو ہم ورزش، یوگا اور مراقبے کے ذریعے سے کنٹرول یعنی قابو کر سکتے ہیں. By these activities, people manage their stress and thus keep their body healthy. ان طریقوں سے لوگ ذہنی دباؤ کو کم کر سکتے ہیں اور ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. Drink water. Our body needs water to function properly. Water maintains body temperature, transports nutrients and water materials and waste materials in your body. ڈرنک واٹر. پانی پینا. ہمارے جسم کو صحیح طور پر کام کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. پانی ہمارے جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھتا ہے. یہ جسم کو غذائیت پہنچاتا ہے اور جسم کے گندے مادوں یعنی پسینہ وغیرہ کو باہر نکالتا ہے. It helps normalize blood pressure and lubricates and cushion body's joints and organs. یہ ہمارے خون کے دباؤ کو نارمل اور جسم کے جوڑ اور اعضاء کو چکنا رکھتا ہے. Students, this is the end of part 4, reading and explanation. We will do book activities and written work in the next class. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.